Dear student, I am Manohar Patil and I know that you all are study about the 12th standard physics and most importantly आपका first chapter है rotational dynamics. Rotational dynamics में हमेशा MCQ पूछे जाते हैं in NEET JEE और CD examination. इसलिए वो chapter में so many formulas are there because there are the different shapes we have to calculate the moment of inertia like that. So most importantly आज का lecture बहुत easy है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट जे और सीटी के पर्सपेक्टिव से। तो आपको इसको एंड तक देखना है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है और कमेंट तो जरूर करना है। सो लेट मी स्टार्ट। सो टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। So now this is the one of the body that is rigid body. Now it is rolls down or the inclined plane, make an angle theta, having height s be the linear displacement of the body. So let's we consider some notations. Capital M be the mass of the body, then r be the radius of the body, then theta is the angle of inclination, then h be the height of the body, and then s be the linear displacement of the body. सो वेरी इजी है पढ़ाई करने के लिए, बहुत ही सिंपल है। आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है। वी नो दैट हाउ वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बहुत सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ दिस इज द डैम, सो दिस इज द वाटर रिजर्वायर and now the turbine is at, so now in this place there is a turbine. So how we generate the electricity हमें पता है। So whenever the water is channelized and now it will fall on the blades of the turbine, so turbine blades are rotated and now it is connected to the generator, so therefore the generation of electricity. So what happen in that case, now the water is stored at height h. सो इसकी वजह से क्या होगा, अगर वाटर को हम h इतने हाइट पे स्टोर करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो भी रहेगा वो कितना रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी m g h, वेयर h इज द हाइट at which the water is stored. And then whenever we open the gate, what happen, whenever you open the gate, that rest water goes into the motion. Whenever it goes into the motion, now it changes its kinetic energy. So what is the kinetic energy? So kinetic energy equal to what, half mv square. So what happen in that case, potential energy losses and kinetic energy changes, or potential energy decreases, kinetic energy increases, or simply we can say that the loss in potential energy is equal to the gain in kinetic energy. बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर वाटर को सर्टेन हाइट पे अगर आप उसको स्टोर करोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh रहेगा। जब भी आप उसका डोर ओपन करोगे, गेट ओपन करोगे, तो वाटर चैनलाइज होगा, वाटर मोशन में आएगा। जब भी वाटर मोशन में आएगा तो व्हाट हैपन, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। सो सिमिलरली वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। सो व्हेन द रिजिड बॉडी इज इंक्लाइन, बहुत सिंपल है, इसी कंसेप्ट को याद रखना है। सो व्हेन रिजिड बॉडीज रोल्स डाउन on inclined plane, what happen in that case, the potential energy, that is gravitational potential energy decreases and kinetic energy increases. So बहुत ही सिंपल है। What happen in that case, whenever the object is rolls down over the inclined surface, इसका हाइट h है, जब भी ये मोशन में आएगा along the straight line, what happen, हाइट डिक्रीज होगा। अगर हाइट डिक्रीज होगा तो साइमल्टेनियसली उसका पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। एंड व्हाट हैपन इन दैट केस, उसका मोशन की वजह से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा whenever it is going towards down. वाई, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हेल्प करेगा। अगर उसका स्पीड बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी, so that is the loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy.
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रोलिंग मोशन. Rolling motion means very simple, that is the body possesses both translation motion as well as rotational motion. Translation motion means whenever the object is moving from one point to another point along the straight line. Now here the object is moving from one point to another point along the straight line, means it is performing the translation motion. What is the kinetic energy of translation motion? Half mv square. And whenever the object is rotating about an axis passing through its center, so what happens in that case? The body possesses rotational kinetic energy. And what is the formula of rotational kinetic energy? Half I omega square. तो बहुत सिंपल है. So हमने उसको अगर टोटल कैलकुलेट किया तो what is the gain in kinetic energy? That is very simple formula, half m v square 1 plus k square divided by r square. So where k is the radius of gyration, r तो हमें पता है already, we write down the rotation radius of that body, v with the linear velocity, m with the mass of that body. And what is the potential energy? The basic formula of potential energy is m g h. So अच्छे से इसको ऑब्जर्वेशन करना है. क्या आएगा आंसर? So on both side mass get cancel. So what is the formula for v square? V square equal to 2 goes to numerator. So multiplication पे चला जाएगा 2gh divided by 1 plus k square divided by r square bracket complete. So we calculate the value of linear speed. So that is v equal to under root of 2gh on divide 1 plus k square divided by r square. So now this is the most important formula you have to remember. So in such way that we can calculate the velocity of the body whenever it is roll without slipping on the inclined plane. So remember v equal to under root of 2gh into bracket 1 plus k square upon r square. So this is the very basic formula. इसको अच्छे से लिखना है. जल्दी recap कीजिए. We go for solving the next, that is acceleration. So how to calculate the acceleration? Very simple. So let's A be the acceleration of the body of a body. So when it is start its motion, so what happen in that case? Its initial velocity becomes 0. So जब भी body motion start करेगा उसके पहले उसका initial velocity क्या रहेगा? 0 रहेगा. और we know that body performing the linear motion. So if the body is performing the linear motion, we can use the kinematics equation. There are the three kinematics equation, that is v equal to u plus at. Remember, next s equal to ut plus half at square, and next time that is v square equal to u square plus 2 times as. हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. सो हमें टाइम तो पता नहीं है, so we skip first and second we use the third kinematics equation. So according to the third kinematics equation, that is v square equal to u square plus 2 times as. As we know that initially उसका speed क्या रहेगा? 0. अगर उसका initial speed 0 रहेगा, so we can write down that is u equal to 0. So उसको simply वहाँ पे substitute करना है. So v square equal to 0 plus 2 times as. We have to calculate the value of acceleration. तो इसको अच्छे से calculate करो. So क्या आएगा? A का आंसर A equal to what? v square और 2 times is denominator में चला जाएगा. And as we know that what is the formula of velocity? We already calculate the formula of velocity, that is v equal to under root of 2gh divided by 1 plus k square upon r square. तो वही फार्मूला हमें लिखना है. v square equal to, we have to calculate v square, तो इसका आंसर आएगा 2gh upon 1 plus k square divided by r square. So most importantly, so यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. Now this is the angle theta. तो ये बनेगा आपका हाइपोटेनियस और ये बनेगा आपका अपोजिट साइड. तो हमें सॉल्व करना है साइन थीटा. सो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. सो वही सिंपल वाला फार्मूला यूज करना है, h डिवाइडेड बाय s. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, so that is sin theta equal to h divided by s. So therefore what is the value of s? तो हम यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे. सो क्या आएगा उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आंसर? h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा. बहुत सिंपल है. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर लिख लेंगे. व्हाट इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर? 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस
k square divided by r square into 1 upon 2 times s, और s हमने कैलकुलेट किया है h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। सो जल्दी से बोलिए क्या आएगा इसका आंसर, बहुत सिंपल है। सो h गेट कैंसल, अगेन 2 गेट कैंसल, and 1 upon sin theta. So denominator goes to numerator. So what we get the final answer? Acceleration is equal to g sin theta divided by 1 plus k square divided by r square. So remember, this is the most important formula. बहुत easy है, बहुत simple है. So we already calculate the acceleration of the body whenever it is rolls over the inclined surface. So जल्दी से इसको write down करना है. Take the screenshot. Most importantly, अगर आपको कुछ doubt है तो you can text me, so I can reply that your questions. And अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है और कमेंट तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।